Hi there guys, welcome to our YouTube channel English Literature. In today's video lecture, we will cover the topic of eco-criticism. The question begins with what is eco-criticism? इस word eco से आपके brain में कुछ ना कुछ idea आ ही रहा होगा कि it might be something in relation in something related to ecosystem, natural phenomena of the world, right? Eco-criticism is the study of literature through an environmental microscope. ये स्टडी नेचर को अप्रिशिएट करती है, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज को रेज करती है एंड सो ऑन. Let's move towards the example related to the main idea of the study for better understanding. If we look at the poem by Wordsworth, who is also known as Nature's Poet, the poem I Wandered Lonely as a Cloud dwells around the description of nature's beauty and its impact on the human spirit. नेचर का और ह्यूमन की स्पिरिट का आपस में बहुत ग्रेव ताल्लुक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इर्द गिर्द का मौसम अच्छा और सीरीन होता है, ऑल ऑफ अ सडन यू फील सोलेस, पीस. दिस इज़ हाउ नेचर प्लेज क्रूशल रोल. You guys might have seen the movie Avatar. ये मूवी ह्यूमन टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स को पोर्ट्रे करता है. सी टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्रेस है ये अप्रिसिएबल है, बट यू नो एवरीथिंग कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स. Human and nature का connection goes hand in hand. If we look at the other example, The Jungle Book by Kipling, ये humans और nature के इंटरडिपेंडेंस को पोर्ट्रे करता है. ये स्टडी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाती है और इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करती है. नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वॉल-ई, जो कि एक मूवी है, डिपिक्ट करती है डायस्टोपियन फ्यूचर. नाउ व्हाट इज़ डायस्टोपियन फ्यूचर? ये क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में. डायस्टोपियन कहते हैं एक अनफेयर सोसाइटी को जहाँ सफरिंग्स और मिजरीज हों. एज आई टोल्ड यू दैट ह्यूमंस एंड नेचर रिलेशनशिप गोज हैंड इन हैंड. अगर नेचर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, देन इट टेक्स ह्यूमंस एज वेल. Then coming towards the other example, the novel The Hungry Tide also explores the same theme. Moving towards the conclusion, this study inspired a deeper appreciation for natural world. इसी के साथ the lecture has come to an end. If you find any confusion, do not hesitate to comment down below. Thank you.